Hey guys, welcome back to my channel. I will discuss Song of the Open Road by Walt Whitman here. It's not gonna be very lengthy video. I will try to make it short. So, Walt Whitman. Who is Walt Whitman? American poet, essayist, journalist. Remember this. And he is known as or is called as the father of free verse. I'm not covering all the details because in appreciation you are just supposed to write about the poet. Even if you just write that he is an American poet, essayist, journalist, is often called the father of free verse. He wrote one very famous or popular poem, that's "O Captain, My Captain," on the death of Abraham Lincoln. Very important detail to be mentioned in about the poet. So when you write appreciation, first point about the poet in that you can write that he was an American poet, essayist, journalist. He is often called as the father of free verse. He wrote one very popular poem, that's "O Captain, My Captain," in the memory of Abraham Lincoln. Second paragraph is very important one. It will give you two things in appreciation. First, about the poem, about the theme. So I will read it. The section one of the Song of the Open Road is taken from a very big poem, that's Leaves of Grass. It's a beautiful blend. Blend means mixture of self-awareness, free will, tenderness of heart. So you can take these three keywords and turn them into theme. It's about self-awareness, free will, tenderness of heart. It gives us poet's realization that along the journey of life, one will face a test of wisdom, which is not tested in any school or university. So यहाँ पे क्या होता है? Walt Whitman tells us that a wisdom is tested in life, not in any school or university. In school, university, you get theoretical knowledge, but जो practical knowledge है वो हमें मिलता है हमारे experience से. हम जो experience लेते हैं, practical experience in life, वो real experience है according to Walt Whitman, और हम वो better सीखते हैं than in school or university. A road is something everyone uses. हम हर आदमी रोड यूज करता है, रिच हो या पुअर हो, सब रोड यूज करते हैं. And very important line here, the road signifies mobility. What is mobility? Movement. आप जब रोड पर जाते हो, आप वहां पे रुक नहीं सकते, आप आपका घर नहीं बना सकते, because road is meant to move. It signifies mobility, movement. So you have to move, and when you start moving on road, definitely you will reach somewhere or other. You can achieve your goal. So road signifies movement or mobility. One can take the road, start over towards something new. Whitman talks about people, places against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. Actually यहाँ पर वॉल्ट विटमैन बोलते हैं हमें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए. दो हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, कितनी भी अच्छी हो, people are very kind, very cooperative, you have got sense of satisfaction at some particular place, but you are not meant to stay at one place. You have to move. As time flies, life moves forward, you have to move
with life, with time. So now I will go to the actual text. As I told you that I will explain in Hindi and English both. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि अगर आप एक बार ये वीडियो को देख ले, आपको फिर से पोइट्री या पोम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये जो पोम है, इसका टाइटल क्या है? द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. वी विल सी दैट नाउ. I will go very slowly. I have got text with me and I'm showing you the text on a screen, so you can follow word by word. If possible, you can have a notebook with you and jot down or note down main points, so that you can use those points in your exam. So this is the text. Afoot and light-hearted I take to the open road. Afoot का मतलब होता है पैदल चलना. On foot or walking. In progress. Afoot, on foot, पैदल. And light-hearted. Light-hearted means I've written there when you are cheerful, when you are carefree. अब हल्के दिल से. So मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं हल्के मन से. I take to the open road. I take, I start or begin or undertake the journey. Where? To the open road. एक खुले रास्ते पर. So ये open road जो है, it symbolizes life, it symbolizes freedom. ये symbolic है freedom का, आजादी का, और जो different opportunities है life में उसका. आप जैसे ही on foot, you are in progress, you are walking and you are carefree, you are cheerful, you are very happy, you are excited and you start your journey to the open road. ऐसा रोड जो सिंबल है फ्रीडम का, आजादी का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का. और what do you see when you start walking on the open road? Healthy, free, the world before me. So आपको आपके सामने क्या दिखता है? Healthy, free, the world. जो ये वर्ल्ड है, दुनिया है, इसको दो एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया गया, हेल्दी एंड फ्री. हेल्दी मीन्स इन गुड फिजिकल कंडीशन. So the world is not in good physical condition. When you say good physical condition, it means you have a sense of satisfaction here. Everything is suitable for you to live. You don't have pollution. You don't have any other problems. It's it's a kind of utopian place. So healthy. Free means freedom. The world before me. So in front of you, you've got a world, lot of scope, lot of opportunities which are healthy and free. Next one, the long brown path. The long brown path. Path means road. Before me, मेरे सामने है. Leading, मुझे ले जाता है. Wherever I choose, wherever I decide to go, it takes me. So always remember, आप जब भी रास्ते पर चलते हो, आपको रास्ता लेकर जाता है आपको जहां जाना है. Wherever you decide to go, it takes you, remember. So long brown path, you know the color of the road, sometimes it's brown. Why is it brown? Because there was one very famous poem by Robert Frost, two road diverge into yellow woods. So I took the less traveled. So जैसे एक जंगल है, वहां पे रोड लोग चलते हैं, चलने के साथ एक पाथ रोड क्रिएट हो जाता है, रिमेंबर. सो उसी तरह से जो ये लाइफ में है, आपको लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, गोल्स हैं, ये आपको वहां पर जाने के लिए एनकरेज करते हैं. सो जैसे ये लॉन्ग ब्राउन पाथ है, रोड है, आपके सामने है, ये आपको ले जाता है आपको जहां पे जाना है. Henceforth, अब से, I ask not good fortune. I don't ask. I don't need good fortune. What is good fortune? अच्छी किस्मत. Luck. Remember, I myself am good fortune. मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूं. Why? Because when you look at yourself, Almighty has made you good fortune, good luck. You have got hands, eyes, legs. You can move wherever you want. Imagine, compare yourself with people, those who are less privileged, those who don't have hands, those who are blind. So when you look at those people, don't you think you are good fortune?
you've got hands, eyes, you can do what you want. You have no limitation at all. So that's why he says that Almighty has made me good luck. मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूं. I don't need good fortune. Henceforth, अब से, I whimper no more. Whimper का मतलब होता है cry softly. ये सिसके लेके रोना. अब से मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोता हूं. I whimper no more. Postpone no more. और अब मैं कोई भी चीज टालता नहीं हूं, डिले नहीं करता हूं. Because he has understood the importance of open road opportunities. He is understood that Almighty has made him good luck, good fortune. उसके पास सब कुछ है. So he says that when you have everything, you have a sense of satisfaction. आप संतुष्ट हो, आप हैप्पी हो, तो क्यों रोना है? So ऐसे बोलता है, अब से I whimper no more. अब से मैं नहीं रोता हूं. पोस्टपोन नो मोर, और मैं थोड़ा भी पोस्टपोन चीजें नहीं करता हूं. आई डू नॉट डिले. आई नीड नथिंग. आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ. आई एम फुली सेटिस्फाइड. आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड. डन विथ इंडोर कंप्लेन्स. आई एम डन विथ, finished with, fed up with indoor complaints. What are indoor complaints? When you stay at home and just complain, do nothing. Many people, they're introvert. They're at home, they just complain, and they don't come out of their houses and do work. As someone said, the ideas without actions are useless. आप घर में बैठे हो, रो रहे हो, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है. अगर आप घर के बाहर आओगे, ओपन रोड पर चलोगे, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं. आप जब उनसे वहां पर जाओगे, नॉलेज हासिल करोगे, आगे बढ़ोगे, सो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. सो ही सेज दैट आई एम डन, आई एम फेड अप विद इंडोर कंप्लेंट्स. घर में बैठ के रोना नहीं है, आपको बाहर निकलना है, काम करना है. इंडोर, एट होम, कंप्लेंट्स. लाइब्रेरीज. सी लाइब्रेरीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. हमको बोला जाता है कि दैट वी हैव टू गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी. भाई यहाँ पे पोइट बोलता है लाइब्रेरी मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज. हमको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखना है, आइडियाज नहीं रखना है. वी हैव टू यूज दोज आइडियाज, पुट देम इनटू एक्शन एंड वर्क. हमें काम करना है. बुकिश नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रैक्टिकल नॉलेज. व्हेन यू कम आउट ऑफ योर हाउस एंड डू वर्क, दैट्स प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है पोइट्स ने. सो उसने बोला है लाइब्रेरीज में जाना जरूरी है. यू गॉट आइडियाज, बट पुट दोज आइडियाज इनटू एक्शन. Ideas without actions are useless. You will never ever get success. किसी ने बोला था your ideas are useless until and unless they are reflected in your bank accounts. Ideas बहुत है, ये ideas से आपका जो बैंक अकाउंट है वो भरना चाहिए, उससे पैसा कमाना चाहिए. आपने आइडियाज रख के कुछ नहीं होता है, आपको काम करना है. Querulous criticism. I am done with indoor complaints, libraries and querulous criticism. Querulous means annoying. Remember, criticism, when you pinpoint, when you complain. I'm done with that. Next one, I will discuss figures of speech in a later slide, so don't worry about that. Strong and content, I travel the open road. Strong means very powerful, energetic. See, आपको जब समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, आपको अभी रोना नहीं है, आप एक खुद एक गुड लक हो, यू आर गुड फॉर्च्यून, यू हैव ओपन रोड, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो आपको एक एनर्जी मिलती है. वो बोलता है स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, वेरी एक्टिव एंड कॉन्टेंट, सेटिस्फाइड. आई ट्रेवल द ओपन रोड. आई स्टार्ट अंडरटेक माई जर्नी ऑन द ओपन रोड. रिमेंबर, अभी मैं समझ गया हूं कि अगर मैं काम करूंगा, इफ आई एम स्ट्रॉन्ग, इफ आई एम कॉन्टेंट, definitely I will reach to my goal. I will achieve my goal. So he says that strong, I am strong now, I am content, I travel, I start my journey on the open road. The earth that is sufficient. Remember, the earth, ये जो दुनिया है, that is sufficient, enough, यही काफी है मेरे लिए. Remember, see, there are so many people, they live in fool's paradise. वो
चाहते हैं कि वो आसमान पे पहुंचे, मगर आसमान पर पहुंचने के लिए आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा. रिमेंबर, एज समवन सेड, जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप. अगर आपको फ्लाइट में भी जाना है तो आपको टिकट कहां से लेना है? यू हैव टू टेक द टिकट फ्रॉम द अर्थ ओनली, तब आप ऊपर फ्लाइट लोगे. सो ही सेज दिस अर्थ दैट इज सफिशिएंट. अर्थ पे कुछ किया नहीं है और बात कर रहे हो ऊपर जाने की. रिमेंबर, सो द अर्थ, ये दुनिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी. नेक्स्ट वन, I don't want the constellations any nearer. So I don't wish, मुझे नहीं चाहिए द कॉन्स्टिलेशन. रिमेंबर, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं, इट्स ग्रुप ऑफ स्टार्स. यहां पर जो इसका मीनिंग दिया है पोइट ने, उसका मतलब है यहां पर जैसे फेट, डेस्टिनी. हम देखते हैं जो स्टार्स है, दे आर एसोसिएटेड विथ योर फेट, डेस्टिनीज. आपके स्टार्स खतरे में चल रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं, उस तरह से बोलते हैं. सो भविष्यवाणी करते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं? मुझे इस सब की जरूरत नहीं. आई डोंट विश एनी नियरर टू कम एनी क्लोजर. आई डोंट वांट देम. आई डोंट थिंक अबाउट डेस्टिनी. मैं तकदीर और फेट के बारे में अभी नहीं सोचता हूं. आई डोंट वांट दैट. आई नो they are very well where they are. I understand that they are perfectly fine, remember, and in their current place. वो जहां पर है वो सही है. I know they are very well where they are. ये जो तकदीर है, डेस्टिनी है, ये जहां पर भी है वो सही है. It's perfectly fine. There is no problem. I do not wish to go closer or closest to destiny or fate. I know they suffice for those who belong to them. I understand that they suffice, they are sufficient. What? Fate, destiny, stars. For those who admire them, who belong to them. जिसके लिए तकदीर है उसके लिए ये परफेक्ट है. It's perfectly fine, remember. So I know they suffice for those who belong to them. They are enough for the people who admire them, not for me, because I believe in hard work. फर्स्ट मैं काम करूंगा, उसके बाद में इसके बारे में सोचूंगा. जो लोग सोचते हैं उनके लिए सही है. I have no problem, remember. So he says, still here I carry my old delicious burdens, remember. Still I carry. मैं मेरे साथ लेकर चलता हूं. रिमेंबर, आई होल्ड देम इन माई हार्ट. व्हाट डज ही होल्ड? ही होल्ड ओल्ड पास्ट डिलीशियस बर्डन्स. बर्डन्स कभी भी डिलीशियस नहीं होते हैं, स्वीट नहीं होते हैं, मगर ये लेके चलता है. सी बर्डन्स, रिमेंबर, व्हेन यू रिमेंबर योर पास्ट मेमोरीज, व्हेन यू आर नॉस्टैल्जिक, यू फील वेरी गुड. रिमेंबर, वो बोलते हैं ना, पहले के दिन बहुत अच्छे थे. मतलब बर्डन था तभी भी, मगर अच्छा था. आजकल इट इज नॉट अ स्वीट बर्डन, इट्स अ वेरी बिटर बर्डन, इट्स वेरी हार्श बर्डन. रिमेंबर, सो डिलीशियस बर्डन. वो क्या बोलता है? ही सेज दैट आई होल्ड देम इन माई हार्ट. आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. आई हैव रिटन देयर. तो यहां पे मैंने लिखा हूं, आई कैरी देम, आई कैरी दोज मेमोरीज. मैं मेरे साथ उनको लेकर चलता हूं. Men and women, different people who came in my life. Remember, parents हो सकते हैं, sisters, brothers और बाकी दूसरे लोग हो सकते हैं. I carry them with me wherever I go. So I carry those memories with me wherever I go. They stay in my memory always. Remember, हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं. See, आप जब आपका पास्ट याद करते होगा, पास्ट दो इट वॉज नॉट गोल्ड, मगर पहले के दिन बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बहुत अच्छे दिन थे. आप जब उनको याद करते हो तो आप खुश होते हो. तो ये बोलता है मैं हमेशा उनको याद करता हूं. दे ऑलवेज कम, दे ऑलवेज स्टे विद मी. सो आई मिस दोज डेज. ही सेज दैट आई स्वेयर इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम. I swear, I truly say, मैं सच बोल रहा हूं. I swear, मैं कसम खाकर बोलता हूं, it is impossible, I cannot
get rid of them. Get rid of, I cannot remove them from my heart and mind, from my life, because sweet memories are the memories which you cannot easily go away with. So he says that those memories, जो वो पुराने जो दिन थे, जो अच्छी यादें थी, मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता हूं. It's impossible for me. I am filled with them. So they are full of, they are in my heart, they are in my mind. I am filled with them. मैं पूरी तरीके से उनसे भरा हुआ हूं. And I will fill them in return, and I will also give those memories happiness. Remember, I will fill them in return. So whatever gaps are remaining, I will fill those gaps. I will make my days happy again. Remember. So here I will also give them memories back to the past. Here वो बोलना चाह रहा है कि I will fill them, जो memories है मैं उनको फिर से happiness से भर दूंगा, और जो कुछ बाकी रह गया है, something is yet to be done, मैं वो कर पाऊंगा. Got it? So ये जो पोइट्री है, it is not so difficult to understand. मैं थोड़ा उसको हिंदी और इंग्लिश में समझाया हूँ. थोड़ा हिंदी में समझाने में थोड़ा सा एक्चुअली इजी नहीं, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील होता है. सो आई ट्राई टू डू दैट. हो गया है. नाउ वी विल हैव सम फिगर्स ऑफ स्पीचेस. नाउ देखेंगे कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीचेस है. वो एग्जाम में आपको पोइटिक डिवाइसेस में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद एक सैंपल एप्रिसिएशन रहेगा. सो आप देख सकते हो. अभी देयर आर सम फिगर्स ऑफ स्पीचेस हियर. First, the long brown path before me leading wherever I choose. It's an example of alliteration. Why alliteration? Because here you can see that which sound is repeated. L sound is repeated. So it's an example of alliteration. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. So good fortune, good fortune. When two words are repeated, repetition. When sounds are repeated, alliteration. So ये दोनों word यहाँ पे repeat हुए हैं, इसलिए ये है repetition. Then we have another example of repetition here. Carry them. It's repeated repetition. Paradox, very important one. Why is it paradox? I told you that no, still here I carry my old delicious burdens. So burdens are never delicious. It's a very contradictory statement. So here delicious and burden express opposite meaning. So you cannot call burdens delicious. यहाँ पे बोला गया है. So ये example है paradox, contradictory statement, opposite meaning. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Criticism and querulous. Even if you say criticism, so here complaints and querulous express the same meaning. Complain and querulous, they explain the same meaning. So it's an example of tautology. जैसे हम बोलते हैं I will give you a free gift. गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, सो फ्री बोलने की जरूरत नहीं है. सो ये फ्री गिफ्ट ये होता है टोटोलॉजी. रिमेंबर. वी हैव गॉट नेक्स्ट हियर स्टिल हियर burdens. So burdens are indirectly compared to something delicious. It's a metaphor. Remember. Climax. Henceforth I need no more old sweet memories are indirectly compared to something delicious. So words are arranged in their ascending order of importance. Remember, that's why it's an example of climax. Strong and content, I travel the open road. Improper word order, improper grammatical word order you can say. So here the words are not in the correct prose order. It's an example of inversion. और correct order क्या रहेगा उसका? I travel the open road, strong and content. Example of inversion. Then repetition है, फिर से inversion है, आप ये देख सकते हो. And you've got climax here. Ideas are arranged in ascending order. Personification, song of the open road. Non-living objects road is given the human quality of singing. ऐसा लग रहा है जैसे कि रोड गाना गा रहा है. So song of the open road, song of someone हो सकता है, song of the bird हो सकता है. यहाँ पे inanimate object का गाना बोला गया है. It's an example of personification. Metaphor, song is indirectly compared to open road. Last one, paradox. Burdens are described as delicious, which is absurd.
I think it's a repetition. ये repeat हो गया है, so it's okay. Now it's an example of a sample appreciation. I will read it fast and I will wind up this discussion. So here about the poet. Walt Whitman was a famous American poet writer. He is best known for his book Leaves of Grass, in which he wrote about nature, freedom, human emotions. His poetry is different from traditional poems because he uses free verse, poetry without rhyme or fixed pattern. About the poem. Song of the Open Road is a poem that celebrates life's journey. It encourages people to step outside, travel, and enjoy the freedom of the open road. Whitman tells us that life is full of opportunities. We should not be afraid to explore new paths. Next, about the title. Song of the Open Road suggests that poem is joyful and musical, like a song. The open road represents freedom, adventure, and new experiences. Whitman uses the road as a symbol of life, showing that every journey brings learning and growth. Poetic devices. Free verse. The poem does not follow a strict pattern or rhyme, making it sound natural. इसमें rhyming words नहीं है, so ये एक free verse है. जैसे poetry describes freedom, same way it's free verse. So you can read it freely without thinking about technical aspect like rhyming words and all that. Repetition, some figures of speeches मैं आपको बताया था, so you can just watch the last slide, previous slides. Imagery, it has got some imageries, describes nature, roads, movement in a way that creates clear picture in the reader's mind. Personification है, symbolism है, theme of the poem like freedom and adventure. The poem encourages us to be free, explore new things. Optimism and self-discovery. It tells us to enjoy life and believe in ourselves. Equality and brotherhood. Whitman believes that all people are equal, should share the journey of life together. What makes this poem special? Special feature एक point होता है appreciation में, so उसमें आप ये लिख सकते हो. This poem is different from many traditional poems because it has no set rhyme or rhythm. It feels like conversation with the reader. Whitman's way of writing makes the poem personal, inspiring, timeless. Last one, my thought. Your comment on the poem you can write as per your wish. So this poem teaches us to be confident, enjoy the journey of life. It inspires us to take new chances and appreciate the world around us. Song of the Open Road is a wonderful poem that reminds us that life is an adventure waiting to be explored. So this is the end of this video. I've tried to explain in Hindi and English both. थोड़ा अगर समझाने में कुछ confusion हो गया है in understanding, so kindly overlook that. So thank you very much. Have a great day ahead.